Lahore, the city rich in culture, heritage, cuisine, and most importantly, music. Music runs deep in the roots of this city. From the love for classical musicians like Rahat Fateh Ali Khan and Sabri brothers, to the craze for rock musicians by famous singers like Ali Azmat, Noori, and Kayas. Lahoris never seem to be getting enough of music. With the advent of numerous types of music, various bands have emerged over the past decade who, with their raw talent and heightened passions, tend to set their landmark in the world of music. Of the many bands trying hard to make their marks, few bands shared their experience with us and told us how a band starts out, how they struggle on their way to success. यार जब पहली दफ़ा प्ले किया तो उस वक्त काफ़ी स्टोन था, मैं नशे में था, तो मुझे कुछ याद नहीं है कोई ख़ास, मगर इतना याद है यार कि थोड़े अंडर प्रेशर सा फील करा पहली दफ़ा ऑडियंस के सामने, लेकिन उसके बाद फिर ऐसा कोई फीलिंग नहीं हुआ, पहली दफ़ा ही सिर्फ हुआ ऐसा. Multinational Corporation, a hardcore punk rock band which is based out in Lahore and has been making original music for almost 4 years. The core members of the band told us about their experience while performing live, how it felt and how they got used to it. With band members, you focus on your qualities, how you contribute to the band, or the jamming session. But in front of the crowd, it always comes as a pressure on the band. They have to focus on how the band performs, but gradually things become easier. Jamming and live playing sort of converges into each other. मैं बेसिकली ज़्यादातर मेटल ही बजाया है, लेकिन अलग मतलब बहुत डिफरेंट किस्म का. साथ में रॉक वगैरह भी, ज़्यादातर डूम मेटल मतलब मेरा मेन वो था. उसके अलावा मैंने थ्रैश वगैरह भी बजाया, मतलब उसके भी मैंने कुछ गाने बनाए हैं, और डेथ मेटल वगैरह भी, ग्राइंड भी सा. लेकिन ट्रेडिशनल म्यूज़िक तो यार हमेशा से ही मतलब साथ है, मतलब जो इस टाइप का म्यूज़िक है, ईस्टर्न क्लासिकल, मतलब नुसरत अली खान वगैरह, और ये जो साबरी ब्रदर्स वगैरह टाइप लोग हैं, अजीज़ मियाँ, इस टाइप के लोग तो मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ. तो मतलब वो तो मेरे इन्फ्लुएंसेस हैं, मतलब वो तो अपनी जगह, मतलब मेरे मैं उनको एक उनकी स्पेशल वैल्यू है. उसके अलावा मैं जो मतलब फेवरेट बैंड है उनसे भी, मतलब जैसे डांस वानो है, मतलब वो मेरी सब बहुत बड़ी इन्फ्लुएंस है. मतलब उस बंदे ने हर सब जॉनर के अंदर ही कुछ ना कुछ किया हुआ है. मतलब मैं अपना वो लिमिट नहीं करता कि मतलब मैंने सिर्फ इसी टाइप का म्यूजिक बनाना है, मतलब कुछ भी बना सकता हूँ मैं, मतलब जब मैं जो मेरा दिन चाहे. Multinational Corporation is a band that started out as a fun idea. Gradually, they realized that they might as well take it seriously. From the first time they played, which was just a stand-on gig, till now, people happen to get very hyper, which sometimes even turns into a violent behavior. Some artists start their journey in music alone, and a lot of them tend to learn the classic genre of Pakistani music. Some of these artists who like both rock and classical genres use the classical element and combine it with rock to make new meaning out of music. Junoon, for instance, was a band which started the trend of Sufi rock, and even after 2 decades, is still used by many underground bands. ट्रेडिशनल म्यूज़िक के हवाले से मैं यही कहूँगा कि काफ़ी ज़्यादा जो हमारी जनरेशन है स्पेसिफ़िकली, वो तो काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस हुई हुई है हमारी ट्रेडिशनल म्यूज़िक से, हमारी कल्चरल म्यूज़िक से, क्योंकि उस तरह की म्यूज़िक हम इतना ज़्यादा देखते नहीं है मेन स्ट्रीम चैनल्स के ऊपर. और उसकी वजह यह है कि वो पॉपुलर म्यूज़िक नहीं है. अब जो ज़्यादा पॉपुलर म्यूज़िक है जो लोग सुनते हैं वो बॉलीवुड की म्यूज़िक है, जो जिसमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक एक एलिमेंट होता है काफ़ी ज़्यादा. और
जो कोक स्टूडियो में भी देखते हैं वो भी सही ट्रेडिशनल म्यूज़िक नहीं होती। वो लोग एक अच्छा एफर्ट कर रहे हैं ट्रेडिशनल म्यूज़िक और कल्चरल म्यूज़िक को प्रमोट करने का, लेकिन उसके अलावा वो भी एक फ्यूजन ही है। वो उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है, वो बस फ्यूजन है। रिलीजियस या इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, मुझे एज सच कोई मसले कभी भी नहीं आए। बस मेरे पेरेंट्स काफ़ी सपोर्टिव थे हमेशा से ही। बस जो इश्यूज़ आते थे वो यही होते थे कि अगर तुम ये चीज़ कर रहे हो तो इससे तुम्हें कभी पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। और अब तक तो जो आंसर मिला है उसका वो यही है कि कोई पैसे नहीं मिलेंगे। जो भी ये कर रहे हैं वो सिर्फ शौक़ के लिए कर रहे हैं। There are recording studios that have been developed in the past few years, like Wallen Studios and 57B, to help out young underground artists in their first studio recordings and promote them in the industry to give them an edge. इस प्रोडक्शन हाउस से we have had a chance to work with a lot of artists. Few of them were struggling, few were of the mainstream caliber. So some of the struggling artists that we worked with were a band called Kayan Band. He was pretty much struggling and he needed some help, so he came to us and we said, okay, why not, let's give it a try. तो मेन स्ट्रीम आर्टिस्ट में शबनम मजीद हैं, उनके साथ एक गाना हमने किया था. फिर शमसा कंवल हैं. दामिया फ़ारूक इज़ अ स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट जिसको लेटली हमने प्रमोट किया है इस प्रोडक्शन हाउस के थ्रू, और शी इज़ डूइंग प्रीटी वेल नाउ. वेल एज़ फार एज़ प्रेफरेंस इज़ कंसर्न, तो हमारी ज़्यादा कोशिश यही होती है कि वोकलिस्ट हो, सोलो आर्टिस्ट हों. बैंड्स भी, इट्स फाइन विद बैंड्स एज़ वेल, बट हमारी ज़्यादा ये कोशिश होती है कि फीमेल वोकल्स हों और सोलो आर्टिस्ट हों. दैट्स व्हाट आवर प्रेफरेंस इज़. माशाल्लाह हमारे पास म्यूजिशियंस तो सारे ही हैं, तो वी डोंट नीड मच, म्यूजिशियन साइड से इतनी हमें प्रॉब्लम नहीं होती. Underground bands' problems mostly arise while performing live, as most of the time the sound equipment provided on the gigs really does not cope up with the music that is being played. But to some bands, this is nothing as they are focused on their ambition so much. They leave their education and keep pursuing their dreams until they have a good grasp of it. फैमिली के रिलेटेड मुझे कभी प्रॉब्लम्स नहीं हुई, मतलब कि इंस्ट्रूमेंट से वगैरह से, क्योंकि मेरे अपने जो फादर थे वो ड्रमर थे और सेकेंडली वो कीबोर्ड वगैरह थे, मतलब कि उनसे इंस्पायर्ड हो के मैंने फिर आगे ये फील्ड चूज़ की. और फिर जो फर्स्ट टाइम मुझे याद है कि मैं गिटार लेकर आया था, तो बेसिकली यही सीन था कि एक मुझे वार्म अप्रूवल मिली थी सबकी तरफ से कि हाँ यू शुड स्टार्ट डूइंग दिस. सेकेंडली अगर सोसाइटी की तरफ से देखा जाए तो हाँ काफ़ी मतलब कि डिस्करेज किया था, और बाकी कि यू शुड लीव दिस, क्योंकि एक तरह से आपके रिलीजन के अगेंस्ट है म्यूज़िक भी जाना, या फिर किसी तरह का भी एक अडाप्ट करना वेस्टर्न कल्चर के किसी भी स्टाइल वगैरह को. तो हाँ उससे काफ़ी प्रॉब्लम्स वगैरह हुई, मगर इफ़ यू लाइक इनटू म्यूजिक यू शुडंट बी अफ्रेड ऑफ डूइंग समथिंग यू लाइक या समथिंग यू लव. Depends on the opportunity that we have, because अभी क्योंकि we're starting out, तो अभी यही प्लान है कि we promote the music in Pakistan, because पाकिस्तान में rock bands are like literally dying, and उसके बाद जब पाकिस्तान में if we like promote our music, और उसके बाद अगर बाहर जाने की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मोस्ट लाइकली विल गो देयर. यार जो इंडस्ट्री है, व्हाट इट नीड्स राइट नाउ इज़ द अंडरग्राउंड म्यूज़िक. एंड जैसे इन्वेस्ट यू सी मेटालिका, स्लेयर, मेगाडेथ वगैरह, they started out somewhere like with broken instruments and everything, or now they stand as the biggest classic bands ever. So what Pakistan needs right now is that thing where underground bands produce most of the music, and वहाँ से music industry will go way up than it is right now.
We asked these underground artists if they could say one thing about rock music or music in general to this generation. What would it be? Music is a form of art, and art should be perceived in every single way. The real music lies between uh, underground bands who pour their souls into the music they make, not in the commercial music. So people of Pakistan should be tolerant, and the music that comes towards them, they should listen to it with open hearts. So that's the only way rock music or any genre of music in general can be promoted in Pakistan. Even though underground bands in Pakistan usually suffer and leave music for good, because the idea of live gigs has gotten really rare. But despite all of these odds, there are bands who keep struggling even in small scale gigs because they are determined that the only way their music is going to be heard on a larger scale is through more live performances. Because at the end of the day, when words fail, music speaks.